देश के सबसे अग्रणी मीडिया समूह इंडिया टुडे ग्रुप के बेमिसाल 50 साल पूरे होने पर आज मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सेरेमोनियल बेल से रिंगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह सेरेमनी दो ऐसे संस्थानों को एक साथ लाई है जिन्होंने भारत को बनाया। इंडिया टुडे ग्रुप ने देश के सफर को दिखाया तो स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट ने देश की आर्थिक ताकत की को रफ्तार दी है। इस खास मौके पर इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी और वाइस चेयरपर्सन कल्ली पुरी भी मौजूद रहीं। साथ में एनएसई के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष कुमार चौहान और इंडिया टुडे ग्रुप के सीईओ दिनेश भाटिया भी इन खास पलों के गवाह बने। एनएसई की बेल रिंगिंग सेरेमनी में एक सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि भरोसा है जो दिखाता है कि भारत की वृत्तीय कहानी किस मोड़ से गुजरी है और कहां तक पहुंची है। इंडिया टुडे ग्रुप अपनी विश्वसनीयता, हिम्मत और नई सोच के 5 दशकों का जश्न मना रहा है। ऐसे में ये सेरेमोनियल बेल रिंगिंग मीडिया, लीडरशिप और बाजार के भरोसे के बीच अटूट रिश्ते को दिखाती है। This is a very special significance to being at NSE today. A nation's health depends upon its financial strength, and this strength has to be institutionalized. Institutions like the NSE build that strength. Institutions like India Today safeguard it with truth, transparency, and trust. It's the same values which NSE adheres to. And today, this coming together is a moment of purpose. Today's bell ringing is symbolic in many ways for us. At the NSE, a bell marks the trading day. For us, it marks the India Today Group's journey from a magazine born in December 1975. From that very first edition, our mission was clear: to hold up a mirror to the nation, to pursue truth with courage, and to document India as it was, as it is, and as it aspires to be. 50 years later, that mission has not endured, but it has thrived. Today, journalism at the India Today Group is digitally empowered, where storytelling transcends platforms and where credibility and candid, constructive conversations, not clicks and TRPs, become the most valuable currency. We carry forward the same promise that defined us in 1975. To always ask the difficult questions, to always stand tall in the face of power, to always serve the people of India with integrity and courage. Thank you to our readers, our viewers, and the extraordinary teams who pour their passion into this institution every single day. To all of you, I offer my deepest gratitude. Thank you, NSE, for this honor. Thank you, India, for 50 remarkable years. The bell we ring today is for the next chapter for India and for India Today. Institutions like the NSE power the nation's economic growth. Journalism powers a nation's conscience. Thank you.